and full view of the stage. लाइट चाहिए फिर। प्रतीक, प्रतीक। हेलो, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया अभी तक, बीए, बीएससी, बीकॉम, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, बीएड, तो वो जाके मशवरा रूम में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। हेलो, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया वो अपना बैच लगा लेंगे। जिनको जगह नहीं मिल रही है नीचे, वो ऊपर जाके बैठ सकते हैं। जो अभी आए हैं स्टूडेंट, उनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन जाके करा लें। हेलो हेलो, चेक चेक। हाँ, हेलो। जगह नहीं मिल रहा है, गर्ल्स हो बॉयज हो, आप ऊपर जा सकते हैं। कोशिश करें कि बॉयज ऊपर जाएं, गर्ल्स को नीचे बैठने दें। सब जितने भी गेस्ट हैं हमारे आ चुके हैं। प्रोग्राम हमारा 5 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा।
तो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जितना जल्दी सेटल डाउन हो जाए, आप अपनी जगह पे बैठ जाएं। जिनको जगह नहीं मिल पा रही वो ऊपर जाके बैठ सकते हैं आराम से। क्या नाम है उनका? सलामत भाई, आप यहाँ पे आके बैठ जाइए और यहीं से ऑपरेट कर दीजिएगा और बता दे रहे क्या करना है। ठीक है, उसको उठाना पड़ेगा बाबू। पॉइंटर चाहिए। हेलो। हेलो। हाँ, स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है अगर कोई बच गए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए तो वो जाकर रजिस्ट्रेशन अभी करवा लें। जो भी स्टूडेंट अभी आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो पहले सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, फिर ऑडिटोरियम में आए।
Audience, can we please have silence? A very good morning to one and all present here. I, Suzanne Jaiswal, welcome our honorable guests, principal, teachers, and students at the launch of Pan India program on cyber security. This is an online safety awareness program in India that is currently operating in 5 regions: Jharkhand, Rajasthan, Karnataka, Delhi NCR, and Northeast. I would now ask the volunteers to escort our guests and the principal on stage for the lighting of the lamp. I request the guests to stay back on stage. And now I request Dr. S.M. Yahya Ibrahim sir and Dr. Neha Tiwari ma'am to come up on stage and present our guests with saplings as a token of gratitude to ADG sir and to Mrinal sir. Can we have a huge... Thank you, ma'am. Thank you, sir. I request our principal to present the sapling to Chadda ma'am as well. Thank you, ma'am. Thank you, sir. I would now request Mrs. Antara Bose ma'am to come up on stage and set the context for today's program. Good morning, students, respected guests, and faculty members of the college. Students, आप थोड़ा शांत रहे. ये प्रोग्राम आज जो शुरू हुआ है ट्रू कॉलर के माध्यम से साइबर पीस फाउंडेशन एंड करीम सिटी कॉलेज, ये है एक ऑनलाइन सेफ्टी अवेयरनेस जो ट्रू कॉलर के द्वारा किया गया है. और ये क्यों हुआ, इसकी जरूरत क्या पड़ी? आप सभी को पता है कि पेंडेमिक के बाद 2020 के से शुरुआत करके हम बहुत ज्यादा जल्दी एक ऐसे वर्चुअल स्पेस में अचानक हमारा ट्रांजिशन हुआ है जिसके लिए शायद हम प्रस्तुत नहीं थे. हमारे पास गैजेट्स है, हमारे पास स्मार्टफोन्स है, टैबलेट्स है, आईफोन्स है, लैपटॉप्स है, और 2 साल आप लोगों को भी पता है कि कैसे आप लोगों ने कॉलेज के क्लासेस किए हैं और जिंदगी पूरी तरह डिजिटल हो गई है. लेकिन क्या हमें ये पता है कि डिजिटल जो गैजेट्स होते हैं, जब हम ऑनलाइन स्पेसेस पे जाते हैं तो हम कितने रिस्क में होते हैं? वी आर ऑलवेज एट अ कांस्टेंट रिस्क. तो यही रिस्क को समझने के लिए, यही रिस्क को जानने के लिए और जो डेंजर्स आपके सामने है उससे उबरने के लिए
ये कैंपेन, ये सेशन की शुरुआत की गई है। और आपका जो सेशन होगा इस इनॉग्रल सेशन के बाद, हम आशा करते हैं कि उससे आपको काफी सीखने को मिलेगा और आप अपने लिए और अपने अपनों के लिए, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के लिए एक ऐसे गाइड के माध्यम से उभर के आएंगे ताकि आप उनको गाइड कर सके कि ऑनलाइन स्पेस पे आप जब रहो तो कैसे आप बिहेव करें। सो कॉन्टेक्स्ट इसका यही है आज के प्रोग्राम का कि साइबर स्पेस में कुछ व्यवहार होते हैं, कुछ एटिकेट्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है और वही आप इस ट्रेनिंग के माध्यम से सीखेंगे। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि इनॉग्रल प्रोग्राम बहुत छोटा है, बहुत स्विफ्ट है, क्योंकि उसके बाद आपकी ट्रेनिंग है। तो हम आशा करते हैं कि आप बहुत कुछ इससे सीखेंगे और आगे भी लोगों को सिखाएंगे। थैंक यू। Thank you, ma'am. I now request our principal, Dr. Mohammad Riyaz sir, to come up on stage to welcome the guests and to address the audience. आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट ऑनरेबल आर के मलिक साहब, एडीजी झारखंड पुलिस, मिस्टर मिनाल साहब, मिस्टर प्रयाग मिश्रा साहब, मैम मैम चड्डा ट्रू कॉलर से, कोऑर्डिनेटर एसएमबीआई इब्राहिम, ऑल फैकल्टी मेंबर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं अपने तमाम गेस्ट का कॉलेज मैनेजमेंट, अपने तमाम फैकल्टी मेंबर्स एंड स्टूडेंट के जानिब से वेलकम करता हूं। सर, आपने हमारे कॉलेज को आज के प्रोग्राम के लिए चयन किया, इसके लिए मैं तमाम, खास करके साइबर पीस एंड ट्रू कॉलर के तमाम ऑफिशियल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साइबर, ऑनलाइन, ये आज की हमारी जरूरत है, हम इसके बगैर रह नहीं सकते, या ये कहा जाए कि हमारे लाइफ का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट हो गया। लेकिन हर एक चीज की कुछ अच्छाइयां हैं तो साथ साथ उसमें कुछ खराबियां भी हैं। कुछ लोगों ने इसमें क्राइम करके कुछ ऐसे वाकयात हमारे सामने आए हैं जो हमारे लिए थ्रेटनिंग है। उसी से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे बीच साइबर पीस और ट्रू कॉलर दोनों ने ज्वाइंट इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है हमारे बच्चों के लिए। ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है और हमारे तमाम बच्चे, आप जो यहाँ बैठे हुए हो, आज ध्यान से इस प्रोग्राम को सीखना, क्योंकि याद रखना ये आपके लिए है और ये प्रोग्राम आपके फायदे के लिए है। इसलिए इस प्रोग्राम को कि एक एक बात को नोट करना और ये आपके आने वाले जिंदगी में काम आने वाला है। इस सिलसिले में मैं दो बात कहूंगा। एक, खास करके साइबर के मामले में, कि लालच के चक्कर में हम फंस जाते हैं और हमें डरना नहीं है। जो अगर हो गया है तो उसके लिए अभी हमें सर बताएंगे हमें क्या करना है, वो हमें उसके लिए जो 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 स्टेप लेना है वो सारी जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन साथ साथ एक बात और कहेंगे कि यहाँ पर चूंकि हमने 100% स्टूडेंट को हमने नहीं बुलाया है, हमारे पास हर डिपार्टमेंट से हमने सेलेक्टेड स्टूडेंट को चयन किया है। आप इस मैसेज को अपने जहां तक हो सके, इस मैसेज को, आज का जो प्रोग्राम होने वाला है, जो भी चीज आप सीखेंगे, ये आप अपने बीच, अपने परिवार में, आप अपने दोस्तों के बीच आप इसको जरूर ले जाएंगे। वंस अगेन मैं साइबर पीस एंड ट्रू कॉलर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे बच्चों के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, खास करके अंतरा बोस जो कॉलेज के लिए हमेशा लगे रहती हैं। सबों का शुक्रिया।
Thank you, sir. We will now have with us Ms. Pragya Mishra Maharishi, the Director of Public Affairs, India Truecaller, who has joined us all virtually to enlighten us about the campaign and way ahead. By the time she joins us, let me tell you more about Truecaller. Truecaller is the world's leading platform for enabling safe communication across the globe. A company started in Sweden, Truecaller has made its home in India. With over 235 million active users today, accounting for 3/4 of the total user base. The core mission is to build trust in communication over the phone and ensure that people are protected from unnecessary spam, scam, and harassment. In 2021, Truecaller blocked 37.8 billion unwanted calls and 182 billion SMSs. Ma'am, can we have you? Yes, absolutely. Thank you so much for having me. Great. So good morning, everyone. And I'm sorry I couldn't be with you in person. I would have, loved to actually be part of this training, but unfortunately something else came up which I couldn't avoid. But I'm so happy to obviously see the room filled and have so many important dignitaries be part of this training. So thank you so very much. Of course, my colleague Hariti is on the ground to help you and support you in any capacity. But I think most of the very important things have already been said, and therefore I won't take too much time, but really say that I think safety in digital spaces and in digital communication is really important at Truecaller. And I know that there are various concerns that you all might have, whether that's on the product itself or outside, or when you navigate around social media platforms as well. And I can assure you that the training that is going to follow is going to help you address all those conversations and all those doubts for sure. So please make sure that you keep the training interactive. Our trainers are extremely engaging and very knowledgeable and have dealt with, cyber threats across, especially with our trainers that we have with Cyber Peace Foundation. So please take the time, to ask questions and also be engaged in the training. And more importantly, I would like to say is that अगर आप जो भी सीखें इस ट्रेनिंग में, आप जरूर कोशिश कीजिएगा कि आप घर जाके 5 या 6 या 10 जनों को इसके बारे में बताएं, क्योंकि जैसे कि पहले लोगों ने बोला है, ज्यादातर हमारा कम्युनिकेशन ऑनलाइन अब शिफ्ट हो रहा है. उसका मतलब ये है कि हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो या कोई रिस्क हो या हमारा अकाउंट हैक हो गया हो या अगर हमें कोई हैरेस कर रहा है फोन या एसएमएस पे, तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं. हमें अकेले रहने की जरूरत नहीं है और इसके बारे में खुद सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत एसेट्स अवेलेबल हैं. द गवर्नमेंट हैज पुट टुगेदर लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज. Technology companies themselves have put together a lot of resources to help you to make sure that your digital communication remains safe. So please do spend time during the training to understand what are those steps that you can take whenever, if there are any problems that you face in your online communication. Specifically for Truecaller, of course, we have over 300 million users. हमारे इंडिया में around 235 million users हैं. और actually 50% of these users are women, क्योंकि women use Truecaller as their first line of defense. क्योंकि अगर आपको पता है कि आपको कौन फोन कर रहा है, तो आप एक बहुत कंसिडर्ड डिसीजन ले सकते हैं कि मैं ये फोन उठाऊं कि नहीं उठाऊं. काफी टाइम होता है कि अगर आप लोग किसी ऑनलाइन क्लास में हैं या कॉलेज में हैं और कोई फोन आ रहा है कॉन्स्टेंटली आपके फोन पे, तो आप देख सकते हैं अगर आपके पास Truecaller है कि वो स्पैम कॉल है, स्कैम है, या कोई इंपॉर्टेंट कॉल है, जैसे कोई बैंक आपको फोन कर रहा है या आपके पेरेंट्स आपको पेरेंट्स का तो ऑफ कोर्स नंबर कॉन्टैक्ट लिस्ट में होगा, बट अगर कोई और आपको कोशिश कर रहा है कांटेक्ट करने की जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है, तो Truecaller आपकी मदद कर सकता है वो कॉलर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, एंड ऑल्सो टू मेक श्योर कि आप वही कॉल उठाएं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. So this is playing a very important role, a proactive role, a preventive role in making sure that your communication is safe, which is very important to us. हमने कोविड के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया था. हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम
और जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके साथ हमने ये इनिशिएटिव लिया था, वो ये था कि काफी लोगों ने अपने नंबर्स ट्विटर पे डाल दिए थे कि अगर आपको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर चाहिए या आपको कोई मेडिसिन चाहिए लाइक फैबी फ्लू या रेमडेसिविर, जो उस टाइम लोगों को बहुत जरूरत थी, उन्होंने अपने नंबर्स ट्विटर पे डाल दिए थे। और क्योंकि हम लोगों को इतनी जरूरत थी एज सिटीजन्स ऑफ दीज एम्यूनिटीज कि हम किसी को भी फोन करने को तैयार थे, और अगर उन्होंने बोला कि हाँ आप एक्स अमाउंट ऑफ मनी ट्रांसफर कर दीजिए, तो हम वो भी करने को तैयार थे, क्योंकि हम वनरेबल थे और वो बहुत डेस्परेट सिचुएशंस थी। उसकी वजह से काफी लोगों का फ्रॉड हुआ, काफी लोगों ने अपने पैसे खर्च कर दिए मगर उनको वो आइटम नहीं मिले। तो हमने पुलिस के साथ कोलैबोरेट करके इन सारे नंबर्स को अपने ट्रू कॉलर इकोसिस्टम में कोविड फ्रॉड के नाम से टैग किया। उसका मतलब ये था कि अगर वही लोग और लोगों को फ्रॉड करना चाहें, वो नहीं कर पाए, क्योंकि उनके फोन पे कोविड फ्रॉड करके लिख के आ रहा था। सो देयरफॉर दे कुड नॉट ड्यूप मोर पीपल, एंड दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव फॉर अस to make sure that Truecaller users and the community at large remain safe. We continue to drive many more initiatives like this, and women's safety is another very important issue for us. You will see a video at the end which will talk about how women's safety and how Truecaller and Guardians, which is a app that we have to make sure safety on the move, helps people stay safe. I would also like to compliment all the incredible work that Jharkhand police is doing, by putting together cybersecurity guidelines for netizens. I'm confident that the training that we put together with Cyber Peace Foundation will also help add on to those guidelines that already the police has put together. I believe there is also a center of excellence at the Ranchi University, to advance research in cyber domain and make sure that all the new threats that are emerging in cybersecurity and cyber safety are something that are taken care of, and students like yourselves and also other citizens in Jharkhand remain safe, along with, of course, the work that Truecaller and Cyber Peace Foundation continue to do on the ground. So I'd like to just wrap this up and really sort of extend my gratitude to all of you for coming in the room, taking the time to take the safety training. I'm sure it's going to benefit you. Please do complete your training so that you can get your certificates. Please do make sure you learn the tips so that you can go and tell others about what is it that you can do online. And we plan to take this program to about 5 regions in the country, train about 16 lakh people around the country. Of course, that is not enough, which is why we need your help to make sure that the word gets around and is widely shared. So please do help us in making sure that digital communication remains safe. And so that you can also get your certificates. Please post them online so that many more people know about our program and can participate in our program. And I'd really like to appreciate, the college for giving your premises and giving your time and having the students to participate. And thank you once again, for taking the time to do this. And, we hope to continue to engage with you in the future as well. And if all of you are not Truecaller users, please do download Truecaller, only because it's also going to help you in your communication in the future. And it's going to make sure that you have a far more digital safe experience, both on SMS and on calling. So thank you so much. Thank you, Pragya ma'am. It would have been great if you would have been here. But anyways, always thanks to the technology. And now we will have Antra Bose ma'am to tell us about the Cyber Peace Foundation. So about Cyber Peace Foundation. Cyber Peace Foundation is the world's first non-profit civil society organization and think tank of cyber and policy experts with the vision of pioneering cyber peace initiatives to build collective resilience against cyber crimes and global threats of cyber warfare. As a pioneer in cyber peace advocacy, CPF is on a mission to promote technology for good beyond borders. Cyber Peace Foundation is involved in policy advocacy, research and training related to all aspects of cyber peace and cyber security. Key areas of Cyber Peace Foundation work are in technology governance, policy review and advocacy, capacity and capability creation, and building through partnerships with various government organizations, academic institutions, and civil society entities.
Thank you, ma'am. And now I invite Major Vineet Kumar, sir, the founder and global president of Cyber Peace Foundation. He is also a social entrepreneur and activist, three-time TEDx speaker, Chevening Scholar, Forbes Under 30 Asia finalist, and a recipient of 8 international and 17 national awards. Can we please have you on stage, sir, to address the audience? थैंक यू मैम एंड इट्स रियली अ प्लेजर। पहले तो सबको जोहार मेरे तरफ से। और मेरे को मालूम है आप लोग हो सकता है कोविड के बाद ये पहला देख रहे होंगे कि हम इतने बड़े गैदरिंग में एक साथ इकट्ठा हुए हैं। सो प्लीज लिसन टू व्हाट वी आर शेयरिंग और आप अपने भी जो व्यूज हैं हमारे साथ शेयर करें। प्रज्ञा हैड ऑलरेडी शेयर्ड कि हमारे पास किस जो कैंपेन है उसके बारे में ब्रीफ उन्होंने दिया है। बट लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मली स्टार्ट विथ अ वेलकम to the chief guest R.K. Malik sir and मैं हमारे chief guest के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा कि जब मैंने सर से मैं कैंपेन के बारे में मैंने कॉल किया, मैंने 2 मिनट में बस सर को एक्सप्लेन किया कि हमारी ये कैंपेन कितना इंपॉर्टेंट है। ट्रू साइबर सेफ ऑनलाइन सेफ्टी कैंपेन ये हम करने जा रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। सर ने शायद से आधा सेकंड लिया होगा मुझे हाँ कहने में। So that shows the commitment of Malik sir, and sir had been instrumental in taking some very lead and key initiatives in cyber security domain. So we are very fortunate to have you, sir, in the function today. I'd like to again thank the principal for supporting us and also agreeing to host this session. This is something very important for us. And like Pragya said, it's a pan-India initiative. And Jharkhand being one of my states, I make sure that we do something in Jharkhand. Jharkhand में मेरा special झुकाव है क्योंकि I am born and brought up in Jharkhand. So that's one reason that we wanted to do here. So thank you so much for your help. In fact, again, our partners Truecaller. Our partners Truecaller, again, very important. And in fact, this is something like when me and Pragya, this initiated last year, when we started discussing and different kinds of issues. जैसा प्रज्ञा ने आपको बताया कि कोविड के टाइम में बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे। कोविड का टाइम में ऐसे इश्यूज हो रहे थे कि लोगों का मतलब लोगों को ठगा जा रहा था, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पे ठगा जा रहा था, उनको वैक्सीन के नाम पे ठगा जाता, बहुत लोगों को ठगा गया। साइबर पीस फाउंडेशन, क्योंकि हम लोग एक संस्था है जो ग्राउंड लेवल पे भी काम करते हैं, बहुत लोगों ने हमें अप्रोच किया, बताया कि हमारे 40,000 निकल गए, 50,000 निकल गए, ऐसे करके बहुत लोगों का नुकसान हुआ कलेक्टिवली। सो ये सब चीज हमने एक डिस्कशन किया, प्रज्ञा के साथ डिस्कशन किया और प्रज्ञा वाज आल्सो वेरी कीन कि हम लोग कुछ स्ट्रांगली करें इस स्पेस में। एंड दैट्स हाउ यू हैव द हैशटैग ट्रू साइबर सेफ कैंपेन बिफोर यू। सो वेरी थैंकफुल टू द पार्टनर अगेन द ट्रू फॉर द ट्रू साइबर सेफ कैंपेन एंड सपोर्टिंग अस। We have guests from Tata Steel also, Mr. Jha. So thank you so much for joining us and gracing the ceremony. I'm sure that your presence would add a lot of weight to this, and we'll take the message to Tata Steel and to the Tata Group as well on cyber security and safety. Basically, and most important, the students. I am super thankful to you for being here in large numbers. और जैसा कि सब लोगों ने, सब स्पीकर्स ने यही बोला है कि आप लोग एम्बेसडर्स हैं, यू आर एम्बेसडर्स टू अस। आप लोग जो आज ये सेशन में सीखेंगे, whatever knowledge you attain out of this session, please promise me that you will carry this message forward to your friends, family, anyone whom you are connected. This is extremely important क्योंकि हम लोग आपको एम्बेसडर्स लेके चल रहे हैं और आप लोग इस मैसेज को बढ़ाएंगे। Also, we talk about prevention. The entire flow of this campaign is we are focusing more on prevention क्योंकि जागरूकता मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। क्राइम हो जाने के बाद पुलिस है टू इन्वेस्टिगेट, बट कभी कभी इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि ये क्रॉस बॉर्डर क्राइम है, ट्रांसनेशनल क्राइम आप कह सकते हैं, इसका कोई बॉर्डर नहीं है। साइबर स्पेस में देयर इज नो बाउंड्री एज सच कि आपका ये थाना ये जुरिस्डिक्शन है, इसका कोई बाउंड्री नहीं है। आपके साथ आप क्राइम यहाँ जमशेदपुर में हो रहा है, बट क्राइम करने वाला हो सकता है कोई दूसरे कंट्री में हो। इट टेक्स टाइम, लेकिन अगर आप जागरूक हैं, इफ यू आर अवेयर नेटिजन, you can keep yourself safe from 99% of cyber attacks. मेजर साइबर अटैक से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने फैमिली को सुरक्षित रख सकते हैं। उसका सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है जागरूकता।
सो प्लीज जागरूक बने, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक अहम चीज मैं बताऊंगा कि आपके साथ अगर अपराध हो गया या आप किसी को जान रहे जिसके साथ अपराध हो गया, तो अपराध को छुपाइए मत, आप जाकर के उस चीज को बताइए। प्लीज रिपोर्ट टू द नियरेस्ट साइबर सेल। एक वेबसाइट याद रख ले आप लोग, cybercrime.gov.in, cybercrime.gov.in। एक नंबर मैं बता रहा हूं 1930। ये सब आपको लीफलेट्स में आपके नंबर्स होंगे, बट आप याद रखिए, इसको दिमाग में रहना चाहिए। कल को किसी भी सोसाइटी में किसी को भी आपके जानकारी में किसी के साथ अपराध हुआ, प्लीज रिपोर्ट सो दैट विक्टिम को असिस्टेंस दे पाए। और ये मत सोचिए कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, अगर मैं इसको थाना में रिपोर्ट करूंगा तो मेरी बदनामी होगी। प्लीज कम ओवर इट। हर किसी के साथ फ्रॉड हो रहा है और हर किसी को जागरूक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है इस एरिना में। सो प्लीज रिपोर्ट रिपोर्ट रिपोर्ट। आप रिपोर्ट अगर रिपोर्टिंग को अगर नहीं कर रहे हैं, एक अपराध को अगर छिपा रहे हैं, तो आप बहुत उससे बड़ा आप अपराध कर रहे हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। रेस्ट साइबर पीस फाउंडेशन, ऑलरेडी अंतरा जी ने बहुत अच्छे से बताया। अंतरा जी को अगेन मैं सॉरी, मैं थैंक यू नहीं कर पाया, बट अंतरा जी का भी एक बहुत अहम रोल रहा है इस चीज को, जो आप ये इवेंट देख रहे हैं, इसको ऑर्गेनाइज करने में। और वो हमसे बहुत क्लोजली एसोसिएटेड भी है फाउंडेशन से। फाउंडेशन की बहुत सारी एक्टिविटीज भी हो रही है, ना कि कॉलेजेस में बट स्कूल्स में। स्कूल्स में हम साइबर पीस एम्बेसडर्स, स्कूल एम्बेसडर, सेफ्टी एम्बेसडर्स बना रहे हैं। स्कूल में हम क्लब्स खोल रहे हैं ताकि क्लब्स में बच्चे और एक्टिविटी करें इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग कंपटीशन, वीडियो मेकिंग कंपटीशन, इंस्टाग्राम रील्स बना रहे हैं बच्चे और उससे जागरूकता फैला रहे हैं। सो वी आर डूइंग अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, सो प्लीज बी एसोसिएटेड। एंड फाइनली साइबर सिक्योरिटी, टेक दिस एज अ करियर ऑल्सो, एज एन ऑप्शन। ये उन स्टूडेंट्स को है जो अब आप आगे कॉलेज में आ गए हैं और अब आप करियर के लिए आप खोज रहे हैं। हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, ये सब आज के ग्रोइंग करियर ऑप्शंस हैं। मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक एथिकल हैकर के फॉर्म में की थी, और आज के दिन में मैं आपको बहुत खुशी से बता रहा हूं कि इस स्पेस में करीब करीब आपको 35 लाख ओपन पोजीशंस है, 35 लाख ओपन पोजीशंस है यहाँ पे, अनफिल्ड पोजीशंस है यहाँ पे, जो आप सब भर सकते हैं। सो बी अ रिस्पॉन्सिबल नेटिजन। देयर आर वेज एंड मीन्स। बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं। रांची यूनिवर्सिटी में अभी डिप्लोमा प्रोग्राम लॉन्च किया साइबर सिक्योरिटी में, जैसा कि अभी इनफैक्ट प्रज्ञा ने बताया। हमारा एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी है, अगर आप उसमें रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ एडवांस रिसर्च करना चाहते हैं, तो यू आर वेलकम। सो लेट्स जॉइन हैंड्स टुगेदर, let it be a partnership between all of us together to make the cyberspace safer. Again, thank you everyone. Thank you everyone for your presence, and it's really a pleasure to be here. Thank you. Thank you so much, sir. So we can say that with this program, we will learn to stay safe online. Don't be quick to click. Women around us may be different, but they aspire for one thing: a safer environment where they can work, grow, and live freely. Here's Aditi. Her thoughts are limitless, and she works hard each day. But some elements try to disrupt the safety around her. She smartly gets them out of her way, focusing on what she loves. In the same building lives Asha, the homemaker who takes charge of her family. But on some occasions, unforeseen and unwanted elements bother her again and again and pull her down, making her sad and vulnerable. But Asha won't allow anyone to make her feel uncomfortable. She blocks harassment immediately. In fact, many women like Asha ensure to call out harassment, reporting such numbers to the police and getting emergency help on Women Helpline number 112, available on Quick Dial on Truecaller. By doing this, they ensure these harassers harm no one else. They do their part in building a safer world and growing the community of good people. Young Sarah works hard to champion the world and embraces all the good around her with open arms. But sometimes she crosses paths with people who don't mean good. But she ensures that her guardians are always looking out for her whenever she is outside traveling. This makes her feel safe with no compromise. It's not okay for women to be harassed, and here is something that you can do about it. Aditi, Asha, and Sarah are you, I, and every woman who is responsibly creating a safer world for herself and everyone around her.
Thank you for this informative video. Audience, can I have a huge round of applause for the video? We will now have Mr. Mrinal Kepal, the Chief Cloud Infra Network and Cybersecurity at Tata Steel. Thank you, ma'am. Honorable Chief Guest, Mr. Mollik, Dr. Riaz, Antara, Major Binit, and all present dignitaries, and all the students, professors, and whoever present in this particular hall. It's my pleasure to address on this particular topic. I will just start with few, just one particular real story, and I will also add some of the this advice, which are actually physical world advice. Wow, those are beneficial in this particular cyber world. The story, what I want to say, I was traveling to one particular city in south. I reached the hotel. Another person also reached that particular hotel. So when my booking just was done, that basically this check-in was done, the other person just check-in करने के लिए वो अपना सब details बताए. होटल बोले क्या बोले? बोले नहीं आपका तो कोई बुकिंग नहीं है. तो the person was totally puzzled. ये कैसे हो सकता है? हम तो बुकिंग किए. बुकिंग कैसे किए है? सो जस्ट सोचिए, ये चीज आपका साथ हो सकता है क्या? नहीं, आपका साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है. So Major Vinit was coming from that angle, that how that this particular कोई भी crime, अपराध किसी का साथ भी हो सकता है, कोई भी victim हो सकता है, but only awareness and जागरूकता आपको ये सबसे बचा सकता है. Now उस टाइम में उनको बताया गया कि इमीडिएटली आप इसको रिपोर्ट करिए. होटल वाला को बोला गया है कि आप भी रिपोर्ट करिए कि आपका ये बदनामी हो रहा है. ये कस्टमर आपको बोल रहा है कि बुकिंग का क्या है. कस्टमर का जो लॉस हो रहा है, होटल वाला को भी लॉस हो रहा है. उनका बदनामी हो रहा है, कस्टमर को पेन हो रहा है. सो दोनों एक्चुअली इसमें विक्टिम है. नाउ इसमें बेनिफिशियल कौन है? जो एक्चुअली क्राइम कर रहा है. सो क्राइम को रोकना है, बदनामी से बचाना है, सबको, पूरा समाज को बचाना. ये पहला मंत्र है. सेकंड पार्ट क्या है? एक मेरा in my earlier company, one of the senior used to tell me, the Mrinal, nothing comes in this world free except mother's love for their children. बोलता है जो माँ के उसको बच्चे के लिए जो प्यार है वही एक सिर्फ फ्री में आता है, और कुछ भी फ्री नहीं आता है इस दुनिया में. सो कोई भी, डॉक्टर रियाज वाज टेलिंग अबाउट द लालच. सो कोई भी फ्री चीज के बारे में कभी भी जाइए मत. सो दैट इज द सेकंड मंत्र. थर्ड थिंग व्हाट आई वुड से, दैट वेरीफाई बिफोर कमिटिंग. कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं ऑन द ऑनलाइन दिस वर्ल्ड, एटलीस्ट 3 बार वेरीफाई करिए इन 3 डायरेक्शंस बिफोर कमिटिंग. कि आप इसको करने से पहले एक बार वेरीफाई कर लिए ये पक्का साइट है, एम आई डूइंग द राइट थिंग, और लोग भी ये करता है क्या नहीं, उनका क्या रिजल्ट आया है. ये सब जो है ये सब कॉमन सेंसिकल चीज है, माइंडफुलनेस है. आपको सबको इसमें ये करना पड़ेगा. नाउ this stage is a very important stage and very important initiatives. With this, actually we can spread the awareness to families, friends, to senior citizens, those who are actually coming to this cyber platform or the online platform, digital platform, this first time. They might not know what are these nuances of this. Iska kya problem kya hai. They are actually doing this for their benefit, but अंदर में कुछ और हो रहा है. तो सबको ये सबसे जस्ट
सिखाना है, बच्चों को सिखाना है, फैमिली मेंबर्स को सिखाना है, ऑल द दिस फ्रेंड्स को सिखाना है, और सब मिलके इसका अगेंस्ट में लड़ाई करना है. एंड आई विश this particular launch and this particular initiative a very big success in Jharkhand, in India. And with this, I will just call this particular speech to an end. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Next, we have Shri R.K. Malik, IPS Additional Director General of Police, Wireless Jharkhand Police, who has served in UN Peacekeeping Force in Warsaw. He has also visited Israel as a delegation of Government of India. He is the recipient of President's Medal for Meritorious Service, President's Medal for Distinguished Service, and Antarik Medal. I request you to address the audience. Sir, can we have a huge round of applause for R.K. Malik, sir? Dr. Mohammad Riaz, Principal, Karim City College, Jamshedpur. Mrs. Antara Bose from the Cyber City Foundation. Major Vineet Kumar, Founder and Global President, Cyber Peace Foundation. Ms. Pragya Mishra Maharshi, Director Public Affairs, India Truecaller. Mr. Mrinal from Tata Steel. The other staffs of Truecaller, teachers and students of Karim City College, Jamshedpur. सबसे पहले मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि साइबर वर्ल्ड के बारे में यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें सबसे कम नॉलेज अगर किसी को है तो मुझे है, क्योंकि हम लोग उस जनरेशन के हैं जब ये सब चीजें थी नहीं और पढ़ाई नहीं जाती थी। तो एक तरह से हम लोग डायनासोर, आप हम लोग को कह सकते हैं कि वी आर डायनासोर्स इन द साइबर फील्ड। परंतु हम लोग इससे रोज अफेक्ट हो रहे हैं। अभी हम लोगों ने दीप जलाई तो हम लोग क्या कहा गया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से रोशनी की तरफ ले चलो। लेकिन कभी कभी जो हम लोग का मोबाइल है जो ऑन रहता है, इसको उल्टा करने की इच्छा होती है कि लाइट से अंधकार की तरफ जाए। जो हमारा मोबाइल ऑन है उसको स्विच ऑफ करके रखते, क्योंकि इतने चारों तरफ से वातावरण से हम लोग इतने अफेक्टेड हो रहे हैं। और जब हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो हम उसके कंडीशंस को नहीं पढ़ते हैं। धीरे धीरे हमारी जो स्वायत्ता है, हमारी जो अपने जीवन के ऊपर जो हमारा कंट्रोल है, वो कंट्रोल हम सीड करते चले जा रहे हैं और हमने पूरी तरह ऑलमोस्ट सीड कर दिया। अब हमारे पास निजी कुछ भी नहीं बचा। जो भी हमारा निजी है वो ऑलरेडी सार्वजनिक हो चुका है। ऐसे वर्ल्ड में एक समय में हम लोग के देश में या पूरे दुनिया में एक ऐसा समय था जब घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों को प्रोटेक्ट करते थे।
उनके लिए ढाल बनते थे। आज हम लोगों ने सारी प्रोटेक्शन अपनी खत्म कर दी है, और जब हम लोगों ने सारी प्रोटेक्शन अपनी खत्म कर दी है तो आज सबसे ज्यादा वल्नरेबल अगर हम हैं तो वी आर वल्नरेबल टू अटैक्स फ्रॉम द साइबर स्पेस। नाउ क्या करें? एक मुझे स्मरण आ रहा है, एक टेलीफोन कंपनी का एक एड एक जमाने में आया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो दुनिया तो हमारे मुट्ठी में आ गई है। जब हम मोबाइल अपने हाथ में लेते हैं तो वर्ल्ड इज विद अस इन आवर पाम, बट वी आर आल्सो एक्सपोज्ड टू ऑल काइंड्स ऑफ अटैक्स। दो तीन तरह के अटैक्स अभी हो रहे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक है जो पर्सन, व्यक्ति को हार्म करता है, हमको, आपको, हमारे डिवाइस के माध्यम से हमको हार्म करता है। और चाहे आर्थिक रूप से हम हार्म हो रहे हों, साइकोलॉजिकल रूप से हम हार्म हो रहे हों, देयर आर वेरियस वेज। आप अभी हम लोग पैंडेमिक से उबर रहे हैं। आप अब पिछले 2 साल का सिनेरियो याद करिए, कितने तरह की बातें जिसको कोई सर्टिफाई नहीं कर सकता था, कोई वेरीफाई नहीं कर सकता था, वो हम लोगों के पास मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, डिफरेंट तरीकों के माध्यम से हमारे पास पहुंचता था। और बीमारी अपनी जगह, बीमारी का खौफ अपनी जगह। तो we are under psychological harm, we are having psychological harm, financial harm, reputation जो हमारा है उसको चोट पहुंचाई जा रही है। किसी भी फोटो को आपने कहीं कोई शेयर किया, that photo is taken out of context, फोटोशॉप करके। there are sick people in the society जो यही कर रहे हैं, जो आपको पर्सनल, आपके रेपुटेशन को हार्म करने का प्रयास कर रहे हैं। और नेचुरली उनको पता है कि एक्सटॉर्शन का ये बहुत ही अच्छा एक जरिया है, चूंकि आप वल्नरेबल हैं सबसे ज्यादा जब आपका रेपुटेशन हार्म होता है। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि जो एक्चुअल केसेस हो रहे हैं, जो रजिस्टर्ड हो रहे हैं डिफरेंट साइबर पुलिस स्टेशंस में, उनमें तो करीब 50% का ग्रोथ हुआ है पिछले 2 वर्षों में। लेकिन आप यह जानकर हैरान होंगे कि 2019 में टोटल अटैक्स एंड अटेम्प्ट्स टू अटैक ये 5 लाख से कम था। आज 2022 आते आते 20 लाख अटैक्स जो हैं वो ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुके हैं पर एनम। और ये 20 लाख अटैक्स जो हो रहे हैं, हमारे जितने भी कॉरपोरेट हाउसेस हैं, बिजनेस हाउसेस हैं, छोटे छोटे बिजनेस हैं, अभी आजकल सभी लोग पेटीएम, QR कोड, भीम ऐप यूज कर रहे हैं। अभी एक चला था हाल में, रात में 9 बजे मैसेज आता था कि साहब आपने अभी तक अपना बिजली का बिल पे नहीं किया है, 1 घंटे का वक्त आपके पास बचा हुआ है, अगर बिल पे नहीं करेंगे आपकी बिजली काट दी जाएगी। गर्मी के मौसम में, जून के समय में अगर कोई मैसेज आपको ऐसा आए तो पहला रिएक्शन होता है कि भाई जल्दी से जो आउटस्टैंडिंग बिल है वो पे कर दो। और उस मनोस्थिति में, उस मनोदशा में हम यह वेरीफाई करना भूल जाते हैं कि ये बिजली डिपार्टमेंट इतना एफिशिएंट कब से हो गया भाई कि हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहा है। अगर ये इतना एफिशिएंट होता तो ये स्थिति थोड़ी होती एनर्जी डिपार्टमेंट, बिजली की। तो हमको ये भी सोचना चाहिए कि जो बिजली आपूर्ति करने में जिसकी उतनी एफिशिएंसी नहीं है, तो वो हमको रात में 9 बजे मैसेज क्यों भेज रहा है कि आप पेमेंट कर दो। तो कहने का मतलब है कि वी हैव टू बी अलर्ट ऑल द टाइम कि कौन सा मैसेज आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसको हम समझें, रीड करें। वेरी सीनियर पर्सन्स, वेरी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, इनफैक्ट मैं तो कुछ ऐसे पुलिस अफसर्स को जानता हूं
जो ये काम कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं, एंड दे हैव बीन ड्यूड lakhs of rupees by cyber attacks. तो जब हम थोड़ा सा असावधानी बरतते हैं तो ये हम लोगों के साथ ये बातें होती हैं. आपको मैं ये कहूंगा, यू आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव मेजर विनीत हियर टू गाइड यू, टू टेक यू टुवर्ड्स दिस कोर्स. हम लोग के राज्य में, झारखंड में कोयला बहुत है, बॉक्साइट है, आयरन ओर है, लाइमस्टोन है, वेरियस मिनरल्स हैं, फॉस्फेट है, लेकिन मैं कहूंगा कि हीरा एक है, वो है विनीत. इसका जो पैशन है, यह पैशन अनबीटेबल है, एंड यू आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव हिम हियर. आप लोग इस पूरे प्रोग्राम का आप लोग सही एक तरह से फायदा उठाइए, निजी तौर पर इनको जानिए, ट्रू कॉलर और साइबर पीस फाउंडेशन से जुड़िए. मैं आपसे यह भी कहूंगा कि झारखंड पुलिस के वेबसाइट पर जब आप जाएंगे, वहां भी साइबर क्राइम से रिलेटेड आपको साइट है कि किसी भी तरह का अगर आपके साथ साइबर क्राइम हुआ हो, आप सामने नहीं आना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं अपने इस इंफॉर्मेशन को कम लोगों के बीच शेयर करूं, तो आप झारखंड पुलिस के साइबर पुलिस स्टेशन में, या जो हमारा इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफ साइबर क्राइम से रिलेटेड जो हमारी वेबसाइट में जो आइकॉन है उसको प्रेस करेंगे, तो यू विल विथ फुल सेफ्टी, विथ फुल सिक्योरिटी, आपका उसमें यू विल गेट हेल्प. तो आप उस साइट को विजिट जरूर करिए, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में आप जो स्टूडेंट्स जो इस देश के भविष्य हैं, क्योंकि अब हम साइबर से बच नहीं सकते हैं, ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है. हमारा बिजनेस, हमारा एजुकेशन, हमारी सोशल लाइफ, ये सभी जो है अब ये एक नेसेसरी हिस्सा बन चुका है. अब हम वापस केव में नहीं जा सकते, अब हम वापस गुफा में नहीं जा सकते हैं. अब ये जो रोशनी के बीच हम जी रहे हैं, ये हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस रोशनी से हम चौंधिया नहीं जाएं, हमारी आंखें बंद नहीं हो जाएं, हम ब्लाइंड नहीं हो जाए. वी शुड नॉट बी ब्लाइंडेड बाय the splendor and the lightning of this cyber world. We should keep our senses together. We should keep our confidence in the system and approach the system is if there is any problem. ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज हैं, ऑनलाइन बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आप अपने स्पेयर टाइम में आप सीख सकते हैं, क्योंकि ये इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल कि इस देश में जहां करोड़ों छात्र छात्राएं हैं, उनको एक एक आदमी तक कोई भी फाउंडेशन रीच करे पर्सनली, ये पॉसिबल नहीं है. तो हमारा आपसे आग्रह होगा कि आप अपने आप को अवेयर करने का जो ये मौका मिला है, इसको गंवाएं मत. आज का जो वर्कशॉप है इसको ठीक से देखें. एंड आई मस्ट थैंक द प्रिंसिपल ऑफ करीम सिटी कॉलेज, बिकॉज जो साइबर से रिलेटेड जो बातें, जैसे जो हम लोग सिलेबस बनाते हैं, तो सिलेबस का जो नॉलेज है वो 10 साल पुराना रहता है. आज जो आप पढ़ रहे हैं वो 10 साल पहले का जो रिसर्च है या उसमें जो रिजल्ट आया वो आप पढ़ रहे हैं. तो साइबर के बारे में आज कोई सिलेबस नहीं है, कोई किताब नहीं है. ये हो सकता है 10 साल के बाद कोर्सेज में आ जाएं, बट 10 years विल बी टू लेट फॉर अस. तो जो इन्होंने आज मौका आपको प्रदान किया है जानने का, उसका भरपूर फायदा उठाएं. और मैं आप सबको शुभकामना देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो ये सेशन हो रहा है इसका एक बहुत फायदा आपके जीवन में आएगा. धन्यवाद. Thank you, sir. The inaugural session is now over. We will shortly start with the technical session, #TrueCyberSafe. Before that, I would now request Mr. Kumar Vikram, the project manager of Cyber Peace Foundation, to come up on stage to present the vote of thanks.
हेलो एवरीवन, कैसे हैं? गर्मी लग रही है? कोई बात नहीं, अच्छी अच्छी चीज सीखेंगे, गर्मी चली जाएगी. So it's my privilege to propose the vote of thanks and acknowledge the contribution of those who worked tirelessly and worked really hard to make this launch happen. I, on behalf of Cyber Peace Foundation, would like to extend the heartfelt gratitude to the honorable guests who took out time from their busy schedule to grace the occasion. Shri R.K. Malik sir, IPS ADG Wireless, Jharkhand Police, and Shri Mrinal K. Pal from Tata Steel, and all the media personnel present in the audience. I would like to thank the team members of Cyber Peace Foundation, volunteers, and the faculty members of Karim City College who supported us in hosting this launch event at this venue. Cyber Peace Foundation would also like to thank the team of Truecaller for partnering with us in the joint endeavor of True Cyber Safe. Thank you for all the contributions and support. On behalf of the team of Cyber Peace Foundation, I would like to thank the global president and founder of Cyber Peace Foundation, who gave us an opportunity to be a small part of his bigger vision of global cyber peace. As Malik sir mentioned, sir, you are indeed a precious diamond for the society. Last but not the least, I would like to thank the audience, without whom we would not have been able to successfully host this event. Thank you all. Please have a round of applause for yourself. You have been the great audience. With this, thank you. हेलो, हमारे गेस्ट प्रस्थान करेंगे.